Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Get a few chairs. Get a few chairs for people who may need. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. This, we don't keep it just here, we take it around. Okay, okay. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Gaur Kimanande. Jayam Vishupad Paramahamsa Pari Vradakacharya Stotra Satya Sri Samad His Divine Grace Shirabai Charan Narvinda Bhakti Vedanta Swami Sri Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skandi Biti Founder Charya's Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Samavata Bhakti Vrinda Ki Harinama Sankirtan Ki Grantara Srimad Bhagavatam Ki Daini Tai Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and to Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada Ki. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Caitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Parakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Sabhadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakanditam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottama Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayan Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta prayesha badreshu Nastaprayeshu abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama-shloke Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed or practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, whose praise with transcendental songs becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Idam Bhagavata Nama Puranam Brahmasamitam Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Uttama Shloka Charitam Shakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat. Dhanyam Swasyanam Maha. This Srimad Bhagavatam, known as the Granthara, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Shri Krishna Caitanya Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sarabhyai Namaha Om Surabhyai Namaha. Om Sarabhyai Namaha Om Surabhyai Namaha. Om Sarabhyai Namaha Om Surabhyai Namaha. Mukam karoti vasalam pangam langayate girim yatkripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam yatkripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Jai Sri Harinam Sankirtan ki Jai Sri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai Sri Nityanand Prabhu ki Jai Samasta Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. Hare Krishna. We have a little bit of a challenge this morning because I'm speaking in English and there's meant to be two translations, one in Bengali and one in Hindi. And that will be a challenge. Who's translating in Hindi? And who's translating in Bengali?
So you can't be sitting side by side. So you work it out. We can stand there. Stand. We can simply sit. No, but we can't have three translation at the same time. No, two Bengali. দূরে দূরে বসতে বলছেন গুরুমাজ ইংলিশে বলবেন আপনি বাংলা দূরে দূরে ডিসটেন্স আচ্ছা ওনাদের কাছে গিয়ে বসুন ডিসটেন্স রাখতে বলছেন আপনি একটু দূরে একটু দূরত্ব রেখে আমাদের থেকে একটু দূরে আচ্ছা আচ্ছা Yeah. তিন সাইডে অল্প দূরে हिंदी समझने वाला सामने आ सकता है, बंगाली समझने वाला पीछे जा सकता है। उधर मैं बैठूंगा हाँ बस ठीक है Yes. So then Bengalis will be where? বাঙালিরা বহু কাছাকাছি हिंदी आगे चले जाए हिंदी जो समझ में आगे आगे चले जाए जिसको बंगाली समझ में नहीं आता है वो सामने आइए। अब बंगाली जो বাঙালিরা है, পিছনে वो চলে इधर যায় आ जाए। বাঙালিরা সামনে থেকে পিছনে চলে যায় हिंदी So here is Hindi, is it? Hindi? अपना बंगाली अपना आप आगे चलिए प्रॉब्लम नहीं हिंदी आगे चलिए उधर माता जी बंगाली पीछे आ जाइए Yeah, Bangla बांग्ला पीछे All of our problems will be solved when we all learn Sanskrit. Exactly. And we are going to teach. Yes. Musical chairs. Yes. Without chairs. বাংলায় বাংলা মোবাইলে পিডিএফ আছে So, yes. We request all the devotees who have a cell phone, which means probably everyone, to kindly put them to rest or to sleep or silent mode, whatever it is that they won't speak. মোবাইল সবাই সাইলেন্ট মোডে করে দেবেন কেউ কথা বলবে না যদি আর্জেন্ট কল আসে Yeah. সাইলেন্ট করে নিন বা কাউকে দিয়ে করিয়ে নিন যাদের কাছে মোবাইল আছে Only if someone is a doctor on call, he can take a call. Otherwise, nobody आप should. लोग अपना मोबाइल को साइलेंट मोड में रख लीजिए कोई भी कितना भी महत्वपूर्ण कॉल हो उसको अटेंड मत कीजिए যারা মোবাইল আছে ওগুলো একদম সাইলেন্ট মোডে করে দিন শুধু See, বললেন যে যারা ডক্টর আছেন yeah. But that's not how I will give my class. इसी प्रकार से गुरु महाराज क्लास देते हैं कोई देखिए ऐसे गुरु महाराज बोल रहे हैं कि क्लास नहीं देंगे आप See, I cannot give a class and have somebody translate in Bengali and somebody translate in Hindi all at the same time. So it means that those who are, most of the Bengali devotees are there, right? Yeah, so they should be a little bit in the back so that simultaneously when I speak, you translate. साथ ही साथ होना चाहिए बोलते हैं महाराज ना अलग अलग नहीं होना चाहिए जैसे महाराज बोलेंगे तो इधर हिंदी में बोलेंगे आप उधर बंगाली में एक साथ होना चाहिए ठीक है Yeah. So I'd like to begin by thanking all the devotees who are present here today for two major events that are taking place at the same time. The two events that are taking place, one has more or less already taken place, kind of a historical event for us here, the installation of Shri Gornitai, and as well as Giri Govardhan, Giriraj. We have had Gornitai before, but this Gornitai will be permanently here at our campus. Yeah. And it is most auspicious day for all of us because it is Nityanand Trayodashi, the appearance of Nityananda Prabhu. And for all of us as devotees
followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the appearance of Lord Nityananda is very significant. हम जो महाप्रभु जो है भक्त लोग हैं उसके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है महाप्रभु का आविर्भाव तिथि Similar to the appearance of Krishna, before Krishna appears, Balaram appears. तो भगवान प्रकट का पूर्व बलराम जी प्रकट Before Lord Chaitanya Mahaprabhu appears, Nityananda Prabhu appears. महाप्रभु का आविर्भाव के पहले नित्यानंद का आविर्भाव होता है It would be an excellent day to all go to Ekashakara today, where Lord Nityananda Prabhu appears. महाप्रभु नित्यानंद का जो प्रकट स्थल है एकाचक्र हम चलेंगे बहुत अच्छा होगा So, all of us are extremely fortunate because we are getting this opportunity of being connected with the Sankirtan movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And this has been made possible, especially as we know, by the preaching efforts of our founder Acharya Srila Prabhupada. What was mostly confined in mostly in Orissa and Bengal for many years has now, by the efforts of all of our acharyas, been introduced all over the world. And this is actually the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu, which is especially being manifest and displayed through the preaching efforts of Nityananda Prabhu. There are many branches of Lord Chaitanya Mahaprabhu. The prominent branch and the main branch is the branch of Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu is that personality who carries within his heart constantly, every single moment, the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So, although this is a Bhagavatam class, we are mainly going to talk about the pastimes of Nityananda Prabhu. And therefore, whenever we speak about the pastimes of Lord Chaitanya and Nityananda Prabhu, we chant a particular mantra that we will chant now. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Sri Chaitanya Mahaprabhu ki, Jai Sri Nityananda Prabhu ki. So Nityananda Prabhu, whose appearance we are celebrating today, it is explained by our acharyas that we cannot get the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu unless we follow in the footsteps of Nityananda Prabhu. तो आज हम नित्यानंद ऋषि को उद्यापन कर रहे हैं
तो ये शास्त्र में वर्णन है कि हम नित्यानंद प्रभु का चरण चिन्ह का अनुसरण नहीं करने से हम भगवान चेतना के प्राप्त नहीं Lord कर सकते। Chaitanya had many very, very close associates, and of course, his foremost associate is Nityananda Prabhu. महाप्रभु का मुख्य पार्षद है श्री नित्यानंद प्रभु। Lord Chaitanya felt that there was no other personality other than Nityananda Prabhu who could actually be successful in preaching in Bengal, and therefore had ordered Nityananda Prabhu never to leave Bengal. तो चेतना प्रभु ने देखे कि नित्यानंद प्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं है जो कि बंगाल और उड़ीसा में इफेक्टिव प्रचार कर सकते हैं। But Nityananda Prabhu, being, as we know, Avadut, could not follow that particular instruction, and he would be also joining the devotees to go to Jagannath Puri every year. तो नित्यानंद प्रभु अवधूत है, तो महाप्रभु जी निर्देश है बंगाल में केवल प्रचार करना, लेकिन उन्होंने उड़ीसा में भी गए थे। So Nityananda Prabhu, he preached very extensively, especially in Bengal. तो नित्यानंद प्रभु व्यापक रूप से बंगाल में सर्वत्र प्रचार किए थे। And he was constantly carrying, isn't it, within the heart, the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो महाप्रभु का जो मिशन है वो नित्यानंद वो अपने हृदय में उसको हमेशा वहन करते थे। What is that mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu? महाप्रभु जो मिशन है, the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu is to especially give opportunity to the most fallen in the stage of Kali. तो महाप्रभु का जो मिशन था वो है एक पतित व्यक्ति को उसको उद्धार करना, is to give opportunity to the most fallen, like Jagai and Madai, who were present 500 years ago, to actually, although most fallen, be elevated to the most advanced platform of Krishna consciousness. तो 500 वर्ष पूर्व सबसे सभी पतित थे जगाई मादाई, तो उनको भी आध्यात्मिक स्तर में One time Srila Prabhupada was explaining, during the time of Lord Chaitanya, there were only 2 Jagais and Madais, or 1 Jagai and Madai, 1 Jagai and 1 Madai. And now, in the world, there are hundreds and thousands of Jagais and Madais. तो 500 वर्ष पूर्व में केवल एक ही जगाई और एक ही मादाई थे, लेकिन अभी हजारों जगाई मादाई से भरा हुआ है जगत। Yes. And therefore Prabhupada instructed that those who are actually truly understanding the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu, they should go out of their way to shake hands with all those Jagais and Madais. प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्ण भावना को समझे हैं, तो वो सभी के पास जाके ऐसा जगह हर जगह मार के जाके हैंडशेक करना चाहिए उसको। Means to make contact and to try and bring them to the fold of Krishna consciousness. उसको संपर्क करना है, उसको किसी प्रकार से उस कृष्ण भावना में लाना है। Yes. So it is mentioned, Kali Kali Yuga Dharma Harinam Sankirtan Krishna Shakti Vinanahe Tar Pravartan, that the mission or the Yuga Dharma for the sage of Kali is spreading the Harinam Sankirtan, but unless one becomes especially empowered by the Lord, it is not possible. शास्त्र में उल्लेख कलियुग में ये हरिनाम का प्रचार करना चाहिए, लेकिन वो भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त नहीं होने से ये संभव नहीं है। So that means that we need to pray for that mercy of the Lord to actually become empowered to help and assist Lord Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu to spread Krishna consciousness.
इसलिए हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, नित्यानंद वो चेतन बाबू से, कि हम भगवान का कृपा की शक्ति प्राप्त हो ताकि हम इसका प्रचार कर सकें। Yes. আমরা ওই শক্তিটা পাই। So how to get this mercy of Lord Chaitanya? कैसे भगवान का कृपा प्राप्त करना है, কি করে সেই শক্তিটা আমরা পাবো জগায় মাঝে উদ্ধার করার জন্য? How to become empowered by Lord Chaitanya and Nityananda Prabhu. कैसे এখন আমরা আমাদের নিজেদের नित्यानंद वो चेतन बाबू के द्वारा করার शक्ति জন্য কি प्राप्त করে करना है। শক্তিশালী করব চৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু In the Srimad Bhagavatam, it is nicely explained how it is only when one is having a purified consciousness that one can begin to engage in activities of devotional service. ये भागवत में वर्णन है कि जब हमारे चेतना को हम शुद्ध करते हैं पूर्ण रूप से, तभी हम इसको कृष्ण भावना को प्रचार कर सकते हैं। তারাই একমাত্র পারবে। Very well famous verse that is explaining, that is in first canto of the Bhagavatam, chapter 2, Divinity and Divine Service. पहले स्कंद में भागवत में दूसरी अध्याय इसका वर्णन है। एवं प्रसन्न मनसो भागवत भक्ति योगतः भागवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जयते. This verse is nicely explaining when one becomes situated in the mode of goodness, one's mind becomes peaceful. तो इस श्लोक में भगवान वर्णन है जो कोई सत्वगुण स्तर में सत्वगुण में स्थित होता है, तभी उसका माइंड शांत होता है, पीसफुल। एवं प्रसन्न मनसो manas, when the mind becomes peaceful, मन प्रसन्नता प्राप्त करती है। the mind can only become peaceful if we become situated in the mode of goodness. तो सत्वगुण में कोई स्थिति अगर जब तक नहीं होता तो उसका मन प्रसन्न नहीं होता, स्थित। Devotee means someone who is firmly established or striving, endeavoring to become firmly established in the mode of goodness. तो भक्त को दीप्ता से सत्वगुण में स्थित होने का दृढ़ प्रयास करना चाहिए। What does it mean to be situated in the mode of goodness? सत्वगुण में स्थित होने का मतलब क्या है? Prabhupada explains, वर्णन करते हैं, to become situated in the mode of goodness means every day chanting the 16 rounds. सत्व में स्थित होना मतलब हर रोज 16 माला जप करना, and also to follow the 4 rules and और regulations. साथ ही साथ 4 नियमों का पालन करना। That is why today, on this most auspicious appearance of Nityananda Prabhu, we are having this initiation ceremony, giving opportunity for people to actually become situated in the mode of goodness. इसीलिए आज परम पवित्र और नित्यानंद का आविर्भाव तिथि में ये दीक्षा अनुष्ठान का आयोजन किया गया है, ताकि सभी हम सत्व में स्थित हो पाए दृढ़ता के साथ। Our difficulties समस्या है in this world, difficulties for everyone actually, is our association, our connection with the modes of material nature. हमारे जो गुणों के साथ जो हमारा जो संपर्क है, वही हमारे संपर्क वही मूल कारण है। As long as we remain connected or influenced by the modes of material nature, then we cannot so easily advance in Krishna consciousness. जब तक हम जड़ापति गुणों के साथ संपर्क में रहेंगे, तब तक हम सत्व गुण या इससे ऊपर नहीं हो पाएंगे। And if we are not situated in the mode of goodness, it is very difficult to take up nicely the process of devotional service. तो सत्व में स्थित जब तक हम नहीं हो पाएंगे, तब तक ये आध्यात्मिक भक्तिमय जीवन को ग्रहण करना मुश्किल है। एवं प्रसन्न मनसो भागवत भक्ति योग्यता. When the mind is purified, when the mind is peaceful, then we can begin nicely to engage in activities of bhakti. तो मन जब संपूर्ण रूप से परिशुद्ध होता है, शांतिपूर्ण होता है, प्रसन्न, तभी हम बहुत सुंदर रूप से हम आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति में जीवन। And it is only when we begin to engage in activities of devotional service that Krishna begins to take attention. Krishna notices.
तो ये तभी भगवान उसको ध्यान देते हैं जब उनका 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 प्रति हम सेवा में जुड़ते हैं, सेवा करना शुरू करते हैं, भक्ति में सेवा में लग जाते हैं। एवं प्रसन्न मनसो भागवत भक्ति योगतः, then Bhagavat Tattva Vijnanam. Bhagavat Tattva Vijnanam means Krishna reciprocates, begins to reciprocate with his devotees. तो भागवत तत्व विज्ञान का मतलब है भगवान उस भक्त को जो भगवान के सामने लगे हैं भक्ति में, उसका आदान प्रदान करते हैं। It means that Krishna begins to empower his devotees. इसी प्रकार से कृष्ण अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करते हैं। Same thing Krishna explained in the Bhagavad Gita. Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti. To those who are nicely engaged in my devotional service, dadami buddhi yog, I give them the intelligence. Yeah. तो इसी को भगवान गीता में कह रहे हैं जो मेरा सेवा में युक्त होते हैं उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। I give them the intelligence means I empower them. तो इसी बुद्धि देना मतलब उनको भगवान एम्पावर करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। Yes. Without receiving, this is the mercy of Krishna. यही कृष्ण की कृपा है। Yeah. So therefore, if we want to become instrumental in helping both Nityananda Prabhu and Sri Chaitanya Mahaprabhu, we absolutely have to become situated firmly in the mode of goodness, beginning. तो Yeah. हम लोग अगर प्रभु चेतना कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भक्ति में दृढ़ होना पड़ेगा। So this is the special opportunity that we receive when we take initiation. विशेष ही मौका है जब हम आध्यात्मिक दीक्षा को ग्रहण करते हैं तो ये मौका हमको प्राप्त होता है। Because at the moment of initiation, as we will be doing after the darshan, those who are taking initiation today will be making these solemn vows to follow these four principles, isn't it? तो अभी थोड़ा दर्शन के पश्चात आप जब यहाँ से आध्यात्मिक दीक्षा लेंगे तो ये सबको पालन करने के लिए दृढ़ निर्णय लेना पड़ेगा। Yes. So, in this way, actually, the movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the movement of our founder Acharya Srila Prabhupada, who is continuing the movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu, is to bring people to that position of goodness and beyond. Yeah. इसी प्रकार से महाप्रभु जो आंदोलन है जो कि प्रभुपाद द्वारा ये आगे बढ़ रहा है, इसी तरह से और आगे बढ़ते रहेगा। ऐसे लोग आएंगे इसको महाप्रभु आंदोलन में जुड़ेंगे, आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, स्थित होंगे। Srila Prabhupada was always reminding us that our movement is primarily a preaching movement. तो प्रभुपाद हमको हमेशा पुनः स्मरण करते थे ये हमारे प्रचार आंदोलन है, preaching movement है। Yes. Lord Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and all the associates of the Lord, they were fully engaged in expanding the mission of Lord Chaitanya. चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, उनका पार्षदगण हमेशा इसमें व्यस्त रहते कि इसको आंदोलन कैसे इसको विस्तार किया जाए, प्रचार किया जाए, बढ़ाया जाए। And we cannot become successful in preaching or expanding the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu unless we are blessed and given the mercy by them. Yeah. तो हम कभी हमारे प्रचार में सफल नहीं हो पाएंगे बिना भगवान का जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त किए बिना। So therefore, when one is receiving, just like today, devotees will be receiving Harinam. Receiving Harinam means the beginning, in many ways, the beginning of our preaching activities. आज जो आप लोग जो हरिनाम प्राप्त करेंगे दीक्षा, ये प्रचार का शुरुआत है। Yes. Yeah. It means
we are officially being accepted in the family of Lord Chaitanya Mahaprabhu, in the family of Krishna, in the spiritual family, and we are being empowered actually to help spread this mission. तो आज हम अनुष्ठानिक रूप से ये जो चैतन्य महाप्रभु कृष्णा प्रभुपाद का परिवार से हम जुड़ेंगे और प्रचार को आगे बढ़ाएंगे. Okay, yeah, that's right. Yeah. इसको सहयोग करेंगे. Srila Prabhupada was always envisioning how more and more conditioned souls could be brought to the fold of Krishna consciousness. तो प्रभुपाद जी हमेशा इसका परिकल्पना करते थे कैसे बद्ध जीव को कृष्ण भावना में लाया जाए. And he established this International Society for Krishna Consciousness to give unlimited opportunities to people to actually take part in this mission of Lord Chaitanya. तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन को स्थापना की है, उसको असीम रूप से उसको सुविधा मौका देने के ताकि वो कृष्ण भगवान को स्वीकार करें. Especially when we take initiation, it means we should become very conscious of this mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu, this mission of Srila Prabhupada. तो जो हम दीक्षा लेने जा रहे हैं तो हमको बहुत ही सचेतन होना चाहिए ये महाप्रभु को मिशन को उसको स्प्रेड करना है. Yes, being conscious of the mission means doing our utmost to assist this mission in being established all over the world. तो सचेतन होने का मतलब हमको इसमें जोड़ना चाहिए और इसको सारा विश्व में इसको स्थापना हो प्रचार हो इसके बारे में बहुत ही हमको सचेतन होना चाहिए और इसको करना भी चाहिए. We should try to understand how there is no greater mission taking place in the world today. तो हमको समझना पड़ेगा कि वर्तमान काल में पृथ्वी में इससे कोई बड़ा मिशन कोई मिशन का कार्यक्रम नहीं हो रहा है. Yeah. सर्वश्रेष्ठ है. Especially the responsibility for taking up this mission falls upon those who actually take initiation. तो विशेष रूप से जो दीक्षा लेने जा रहे हैं हमको इसको और भी गंभीरता से इसको लेना चाहिए. Yes. So, in other words, taking initiation is a very serious moment in one's life. One बहुत ही महत्वपूर्ण मुहूर्त है जो आप दीक्षा लेने जा रहे हैं. हमको बहुत इसमें बहुत गंभीर होना चाहिए. Yes, it is. Our Shastra is explaining how rare it is to get this human form of life, and even more rare upon getting the human form of life to come in contact with devotees. ये बहुत ही दुर्लभ है मनुष्य जीवन प्राप्त करना और इससे बहुत दुर्लभ है कोई भक्तों का संपर्क आना और भक्ति करना. It is explained how the real success for a devotee, for a disciple, is to actually understand, meditate upon, and help fulfill and execute the mission of the spiritual master. समझना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण है हमें मिशन को सपोर्ट करना चाहिए सहयोग करना चाहिए. So, of course, our founder Acharya, His Divine Grace Srila Prabhupada, gave many very, very important instructions. तो
हमारे जो समस्त आचार्य कृष्ण कृष्ण प्रभुपाद बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं প্রভুপাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ and it is our duty and responsibility to understand these various instructions given by Srila Prabhupada. तो ये प्रभुपाद के द्वारा दिए गए शिक्षाओं के निर्देश की हमको ये हमारे कर्तव्य है एवं हमारे दायित्व है इसको अच्छी तरह से समझना Yes, and we should know also that Prabhupada explained that there is 50% of my mission yet to be fulfilled. प्रभुपाद बोले मेरा 50% যে আমার 50 ভাগ प्रोजेक्ट আমি अधूरा है যেটা करना है সেটা হয়ে গেছে बचा है 50% of the mission yet to be done. এবং 50 ভাগ এখনো 50% করতে বাকি আছে करना बाकी रहेगा Baki ache, yeah. যেটা ইচ্ছা Baki ache, yeah. বাকি আছে সেটা জানতে হবে Yeah. So therefore, we should try to understand what that means. हमको समझना चाहिए ये क्या है मिशन क्या है क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद ওই যে 50 ভাগ মিশন যেটা বাকি আছে সেটা কি 50% of that mission, Prabhupada mentioned, is to establish Daiva Varnashrama Dharma. तो 50% जो এবং ওই যে 50 ভাগ বাকি আছে बाकी है दैव वर्णाश्रम को समाज में स्थापना करना দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম Yes. এইটা বোঝা এবং এটাকে পালন করা এটা And 50% বাকি and just very briefly, every devotee should try to understand what exactly that means. এবং ভক্তদের प्रत्येक actually भक्त को জানতে হবে ये দৈব समझना বর্ণাশ্রম चाहिए ব্যাপারটা दैव কি वर्णाश्रम ये क्या है সেটা ভালো করে জানতে হবে Yeah. We will not go into great detail because that's a very large topic, very बहुत big ही बड़ा topic. विषय है तो हम पूरा আস্তে विस्तारित আস্তে জানতে नहीं হবে जाएंगे কিন্তু আজকে একটু মহারাজ বলবেন যে ব্যাপারটা কি তবে আস্তে আস্তে আপনারা জানবেন পরে There are three main areas which will help re-establish and introduce this Varnashrama Dharma. এখানে তিনটে আলাদা तीन আলাদা क्षेत्र विषय है যেটার जहाँ हम মাধ্যমে আমরা এই वर्णाश्रम দৈব को हम स्थापित कर सकते বর্ণাশ্রমটাকে हैं আমরা दैव वर्णाश्रम এস্টাবলিশ করতে পারবো স্থাপন করতে পারবো And তিনটে মুখ্য বিষয় this project here is especially focused on these three things. तो यहाँ जो এখানে এই যে प्रोजेक्ट দেখছেন আপনারা हो रहा है মহারাজ यहाँ করেছে वही तीन विषय में फोकस প্রধানত ध्यान दिए তিনটে जा रहे हैं বিষয়ের উপরে ফোকাস করে মানে তিনটে বিষয় ভেবে এটা মহারাজ এখানে করেছে And this is meant to be introduced everywhere also. এবং और इसी এইটা प्रकार আস্তে का আস্তে मॉडल जो है সব सर्वत्र জায়গায় এটাকে इस तरह से introduce स्थापित করতে करने হবে। का সব জায়গায় এটাকে প্রচার लक्ष्य है করতে হবে So in order for the Varnashrama mission to be successful, one of the important components is to re-establish traditional Gurukulas. হ্যাঁ तो এবং এই ये वर्णाश्रम को स्थापित करने के लिए एक মিশনটা महत्वपूर्ण স্থাপনা विषय है করতে গেলে गुरुकुल की स्थापना সব करना থেকে गुरुकुल আগে शिक्षा যেটা করতে হবে যে আগে যে গুরুকুল সিস্টেম ছিল বৈদিক সিস্টেম Yes. সেই গুরুকুলটাকে স্থাপনা করাটা আগে তৈরি করতে হবে This is not only important for Gurukul boys, but it's also and probably more so important for the parents of the Gurukul boys. गुरुकुल केवल गुरुकुल विद्यार्थी के नहीं उसका पिता माता के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है মা বাবার জন্য এটা বেশি विद्यार्थी से ज्यादा उनका पिता माता को ज्यादा महत्व Because we cannot get any Gurukul boys unless mother and father are understanding the importance of giving their child for the Gurukul. जब तक पिता माता इसको समझ नहीं पाएंगे तो बच्चे को गुरुकुल में नहीं देंगे इसलिए पिता माता गुरुकुल के सबसे महत्वपूर्ण है उसको पहले समझना पड़ेगा সফলতা Yes, we have to build up, we have to train, we have to educate young boys to gradually, through this system of traditional Gurukula, to become acharyas, teachers in this science. विद्यार्थी जीवन से उसको उसका भविष्य को निर्माण करना है আমাদের বৈদিক সিস্টেমে जन्म में उसको आचार्य बनाए गुरुकुल को आचार्य का स्तर पर उसको उन्नीत करना है শিক্ষক হয়ে Yes. তখন এটা সারা পৃথিবীতে প্রচার করে সেটা গুরুকুল থেকেই তৈরি হয় এইভাবে training হয়। Actually, up until the age of 12, Nityananda Prabhu was not in Gurukul, but up until the age of 12, but when one sadhu came, that's the whole story, I think everyone knows. Although Nityananda Prabhu was the only child of Harai Pandit in Ekachakra,
his father and mother actually allowed him to go with the sadhu, and he got very personal, direct training from that particular sadhu. Yeah. নিত্যান্ত বাবু যদিও গুরুকুলে ছিলেন না, হারাই পণ্ডিতের পুত্র নিত্যান্ত বাবু, কিন্তু একজন সাধু এসেছেন এবং তাকে সরি বেঙ্গলি সেই समझ में आ रहा है कमिंग तो नित्यानंद बाबू गुरुकुल में जब भी नहीं थे तो उनका हराई पंडित का पुत्र नित्यानंद बाबू को पास एक बार एक साधु आए थे और उनका पितामाता नित्यानंद बाबू का पितामाता उनको सम्मति दिए थे, तो नित्यानंद बाबू को स्पेशल संघ मिला था, वो साधु का उनको उसका निर्माण हुआ था, प्रशिक्षण मिला The था। Bengali influence is very strong this morning. Yeah. So this is one of three absolutely essential aspects that are needed to revive Vedic culture, establishing Gurukula. तो गुरुकुल स्थापना करना इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, एक समाज स्थापन The second very important, दूसरी है and these are all instructions given by Srila Prabhupada. Second instruction गोपाल जी द्वारा दिया गया है बोलेगा कि नहीं এইভাবে बोलेगा गुरुकुल is to establish Varnashram colleges. इसके लिए वर्णाश्रम कॉलेज की स्थापना करना सबसे महत्वपूर्ण है। कॉलेज स्थापना करते হবে Varnashram college is for those who are a little bit older, वर्णाश्रम कॉलेज दो थोड़ा सा उम्र से ज्यादा बड़ा है, those who have missed Gurukul. गुरुकुल का शिक्षा प्राप्त करने का मौका जिसको प्राप्त नहीं हुआ, उन बड़े बड़े व्यक्ति के लिए। Varnashram college is for the unfortunate souls who did not go to Gurukul. दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के लिए हैं जो गुरुकुल को लाभ नहीं ले पाए, By going to Varnashram college, they'll become fortunate. तो जो गुरुकुल में नहीं जा पाए तो वर्णाश्रम कॉलेज में जाने के बाद वो दुर्भाग्यशाली जीव भाग्यशाली हो जाएंगे। So in Varnashram college, we will be training acharyas who will be able to establish Varnashram college and Gurukulas. Yeah, both. वर्णाश्रम कॉलेज में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें जिसके जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो गुरुकुल भी स्थापना कर पाएंगे और वर्णाश्रम कॉलेज भी स्थापना कर पाएंगे। And, yes. সুযোগ পায়নি তারাও এখানে সেই জিনিসগুলো জানতে পারবে So, by Krishna's mercy, we are having this building, I see, which will become what is called our Gita Patshala Gurukula. तो भगवान कृष्ण की कृपा से जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ गुरुकुल चालू होगा जिसका नाम होगा गीता पाठशाला गुरुकुल। That will actually be Bhakti Vedanta Gita Patshala. इसका नाम एक्चुअली है भक्ति वेदांत गीता पाठशाला। Yes, this name Gita Patshala, স্কুলের নাম Srila Prabhupada has given himself in his essay called Gita Nagari. Gita Nagari essay. Yeah. नाम दिए गीता नगरी बोले प्रोजेक्ट আছে একটা, তো এটা হচ্ছে গীতা পাঠশালা। জানাগরি বলে তাও বুঝতে পারছি না गोपाल जी गीता नगरी जैसा एक प्रोजेक्ट स्थापना किए वो है। Yeah. So, Krishna willing, we will have both Gurukula here, and we encourage devotees in other places to also gradually establish Gurukula. तो फिर यहाँ भी गुरुकुल रहेगा और दूसरा क्षेत्र भी हम गुरुकुल बनाने के लिए उत्साह प्रदान करेंगे। And we will also be having Varnashram College eventually. और साथ ही साथ वर्णाश्रम कॉलेज भी उसका भी বর্ণাশ্রম কলেজও The third is training individuals who will be able to revive Vedic villages. और ये प्रशिक्षण दिया जाएगा व्यक्तिगत रूप में हर एक व्यक्ति इसको वैदिक विलेज वैदिक गांव का निर्माण करेंगे। Yeah. उसका भी प्रशिक्षण दिया And Vedic village will be guided by especially those who are of a Kshatriya nature, leaders. तो जो क्षत्रिय स्वभाव का है वही उसके द्वारा ये वैदिक विलेज का निर्माण Yes, yes. तो प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। So in this way, there is a lot of work, a lot of service to be taken up. काफी विषय है करने के लिए, Yeah. बहुत ही है। So therefore, my humble request is that मेरा विनम्र निवेदन है especially those who are taking initiation today to try and understand more and more, deepen their understanding of Srila Prabhupada's mission. जो
विशेष रूप से जो आज दीक्षा ले रहा था वो भाई शिक्षा को गंभीरता से समझे, समझने का प्रयास करे इस विषय में। Yes. And it will only be possible if individually, as devotees, we take the vows, especially I'm directing this to those who are taking initiation. If those who are taking the vows remain very serious in following their vows. तो ये तभी संभव हो पाएगा केवल मात्र आज जो दीक्षा लेंगे इसको भी गंभीरता से इसको भी प्रतिज्ञा करें और इसको गंभीरता से हर कैंडिडेट तभी ये संभव हो सकता है। Yes. So my humble request also to all the devotees is to mentally give your blessings to those who are taking initiation today. Bless these devotees so that they can keep their vows nicely and advance in Krishna consciousness. तो जो भी और भी भक्त लोग जो उपस्थित हैं तो जो दीक्षा प्रार्थी को विशेष रूप से आशीर्वाद प्रदान करें ताकि वो इसको ये जो इसको गंभीरता से उसको ग्रहण करें और इसको कर पाएं। Yes. सबका आशीर्वाद दीजिएगा। Because without the mercy of Vaishnavas, we cannot succeed. क्योंकि वैष्णव का आशीर्वाद के बिना हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we will now have darshan of. Yeah, we'll have darshan of Sri Gaurnitai and Giriraj, Krishna Balaram, and Shaligram. Krishna Balaram, Shaligram also is there. Yeah. So we will be playing the Govinda prayer as we. So it means today.